ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट बनाए बहुत ही स्पेशल बनाए गए, क्योंकि आप यदि वहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे तो ये अलग अलग एक्सरसाइज वो काफ़ी लोड से करते हैं। नासा हो या फिर यस, इसरो हो, उन यस, दोनों के दे शुड एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत दे बड़ा, शुड यूज कि वो अभी आप बता रहे थे कि वो कहाँ Yes, पे this लोड this is करेंगे। adjustable. Like you wear it and then load yourself. नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद जिंदगी मौत से लड़ती हुई अब धरती पर लौट आई हैं। धरती पर लौटने के बाद उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा तो हम सभी ने देख लिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि उनके हेल्थ चैलेंजेस अब समझ आएंगे और वो कितने दिनों तक कितनी गहन चिकित्सीय स्थिति में रहेंगी और उनके साथ उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। उसके लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर के दीपक के पास। तो सर, क्या ये लगता है कि वो दिखाते भी हैं कि स्पेस में गए तो वो एक्सरसाइज कर रही हैं, या योगा डे पे अगर आपको याद हो तो वो योग करते हुए उन लोगों ने इंडिया को भी विश किया था। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं वो तो पहले से हो रही हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये है वहां पे? Yes. So जो ISS स्टेशन है, जब एस्ट्रोनॉट वहाँ गए, देखा गया तो सबसे इम्पोर्टेंट काउंटर मेजर फॉर बिल्डिंग मसल्स, मसल ना हो उसके लिए एक्सरसाइज इक्विपमेंट बनाए गए। ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट बनाए बहुत ही स्पेशल बनाए गए, क्योंकि आप यदि वहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे तो यदि आपने जंप किया तो आपका होल स्पेस स्टेशन हिलने लगेगा, तो उसको वाइब्रेशन आइसोलेशन किया जाता है, so that when you jump or do exercise it doesn't transmit to, otherwise it will start out। तो उसके लिए अलग से इक्विपमेंट, जो मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट अभी जो यूज किया जाता है वो है एडवांस्ड रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस, अच्छा। ARED। इट्स a big device, it's like a gym equipment by which हम लोग जो आइसोटोनिक मसल्स होते हैं, रेजिस्टिव एक्सरसाइज, लोड एक्सरसाइज वो करते हैं। और इनके भी शेड्यूल होते हैं, लेग का शेड्यूल है, हैंड का शेड्यूल है, बैक का शेड्यूल है। तो ये अलग अलग एक्सरसाइज वो काफ़ी लोड से करते हैं, बिकॉज जो लोड एक्सरसाइज होती हैं वो मसल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, इवन ऑन अर्थ it is very important। So using that ARD equipment, it's almost compulsory 2 hours and more, 2.5 hours they have to do exercise, which is really tough on psychological aspect. Who goes for 2 hours and exercise on earth as a human being? It's very difficult, it's very boring. So but they have to do, this is a protocol and by which they maintain muscle. So there are special equipment, ARED, advanced resistive exercise device on which they do exercise। तो आपने बताया कि वो, अभी हम लोगों की बात ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी, तो आपने बताया कि वो 25 सालों से वहां पे सारा जिम ये एस्टेब्लिश है। यस, ये बीच बीच में इनके एडवांसमेंट होते गए। मोस्ट एडवांस डिवाइस इज दिस which can do isometric exercise for the leg compartment, for head, trunk and whole body। You can see that very simple equipment. In fact, what gym has, it is more advanced version, it is fitted into this, so there is a exercise schedule, it's been there। Without exercise nobody could have imagined go to space and remain there, even for weeks they should start doing, because within 2 weeks you start losing your anti-gravity muscles, the standing muscles। So these are there. Before that resistance bands were there, treadmills were there, treadmill with a bungee rope, like you tie yourself to the treadmill, otherwise you'll fly। So there were earlier the treadmills and they are all still there, the treadmills with the bungees। So they do different kind of endurance exercise, they do muscle building exercise, they all do। However, this is still insufficient। That's why our innovation in the future would come, that the rest of the time during the daytime except the sleep time they should be loaded partially or fully। If my body weight is 53 kg, I should at least load myself 40 kg for the whole day if I'm walking or sitting। So while sitting I'm still loaded, I'm not unloaded। Therefore we are तो thinking, मतलब वो आपका गियर जो है वो yes, नासा हो या फिर yes, इसरो हो, उन yes, दोनों के they should एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत they बड़ा, should use कि वो अभी आप बता रहे थे कि वो कहाँ yes, पे लोड this is करेंगे। adjustable, like I told you, from head to toe this loads your body to the desired adjustable level so that you are comfortable। You wear it and then load yourself, and by loading you can work, because 10%, 20, 30% loading is not a big problem, but the loading is important to maintain a muscle tone। The problem happens with the muscle tone। Muscle goes waste, muscle tone comes down, you are not using, therefore the brain is also not sensing your
your proprioception, so it's also not activating. That's a big problem. तो सर जब वो जो आपका गेयर है जिसको आपने पेटेंट कराया, जब वो एस्ट्रोनॉट लेके जाएंगे स्पेस में, तो उसके बाद जब वापसी होगी उनकी, तो उसके बाद क्या वो आपको लगता है कि वो टेन्योर कम हो जाएगा, उनके जो रिकवरी का टेन्योर Yes. 3 वीक्स और 45 डेज का है वो 1 वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो वहां पे भी स्पेस में भी अपने आप को लोडेड फील करेंगे जैसे आप अर्थ Yes, पे हैं? so both advantage. जी। So in space they will feel loaded, good, that okay, the way we are Earth, and then they will perform activity. At least the body activity with respect to ground, like sitting, standing, will have some effort. So the way you see Sunita Williams doing somersault, that's fine. It's a good for one time, but all time is not good. So if you wear the body gear and there's a ground, and if you are stick, you cannot do it because then you are connected to the ground, and then you can walk. So when you walk with that body gear, then you are lifting the legs with force. As of now, she is lifting the leg without force. But yes. then you can, and that is also adjustable. So lifting, the way we lift our leg, they will have the lift the leg, the body part. So the body activity with respect to the ground will be added, which is not there. Body activity with respect to my body is there, so I can turn myself. That's okay. I can move these hands with respect to the body, but with respect to the ground, I cannot do. One cannot do in space. Therefore, this will be added advantage, and I'm sure 100-fold if they practice that, when they come back, they'll be able to stand at least to some extent because their anti-gravity muscles are activated. The whole intention, their anti-gravity muscles should not lose their the functionality, the volume, and other things. Second, if they use continuously, their bone loss will be much less. It will not be too less. May not be equal to Earth, but it is going to be less. So whole day when they are awake, they should be loaded. Whatever comfortable load, like on Earth also, we stand for 2 hours, then we feel relaxed. Okay, then we loosen ourselves, lie down, and then we again come back. The same thing should be happen. So my whole idea, there should be a space where they feel at home, like there's a ground and there's a wall. Every surface should not be a wall, which is my concept. This is what, and then obviously some other devices which can help. So it's a loading, graded or gradual loading of the body, which will help. तो क्या आपको इसरो ने किस तरह की हेल्प की इसमें, और नासा से आप लोगों ने कांटेक्ट किया क्या? So I've been doing my research as a scientist. I keep on publishing, and yes, we have some Thank you. contact, and they do contact us. So it's all mission mode. So तो सर ये अभी हम लोग के लिए तो खाना आ गया है, कुछ स्नैक्स वगैरह। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब सुनीता विलियम्स आ गई हैं और अब यहाँ पे उनको यहाँ भी भूख लग रही होगी, तो अभी उनको क्या लिक्विड डाइट दिया जा रहा होगा या उनको कुछ सॉलिड भी दिया गया होगा? So to be frank, I'm not aware of this. So I've Okay. not gone into that subject topic. How they, अच्छा, लेकिन क्या दिया जाता होगा? जैसे आपने बताया कि बिना सपोर्ट के वो चल नहीं पा रही होंगी। It will be gradual. The feeding, it should not be a problem because spoon feeding or they can hand that much power is there. Hand movement, body movement with respect to body are there. So that's not a, she can feed herself and she can gradually come to this. They are put in quarantine. I don't know what degree of quarantine is now. They are put isolated. So they are avoided, like his types of all clean and everything should be guarded. So, but gradually she can take over whatever she has continued. Food should not be a problem. GIT should not be a big problem. मतलब जो भी खा रही होंगी वो वहाँ पे लिक्विड फॉर्म था या सॉलिड था? Solid does not matter. Quantum composition is almost the same except the food part. अरे वाह। So there should be.